My clientele started increasing every month, like four times from that 100. So I picked my price from 100 to 150, 150 to 200. ऐसे करते करते 12 महीने के बाद I was making about I think $2,000-3,000, and then since then मैंने pro debut किया, I came top 5. Then people started recognizing me. मैं social media में I put a lot of money into my social media. Videographers, photographers, I invested money from savings that I had. So all that money जब मैंने इन्वेस्ट किया तो लोगों ने मुझे देखना देख किया, मेरी वेबसाइट खुली, मेरे को स्पॉन्सरशिप के पैसे ज़्यादा बढ़े, सेल्स बढ़ी सप्लीमेंट्स की, और कंपनीज आई क्लोथिंग की। ऐसे करते 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 फ्रॉम 2019 से लेके अब क्या 2023 में 4 साल में एवरी ईयर देयर हैज बीन अ ग्रोथ ऑफ 20%, 30%, 40% ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट्स हाउ I'm finally a full-time athlete that now has multiple businesses and multiple sponsorships, and now I can just say that I will never have to go to engineering ever again. बट अभी तक भुवन भाई ने पूरी स्टोरी बता दी, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं बताइए कि एज एन एथलीट वो कितना कमाते हैं। Approximate value, it's basically like my goal is financial freedom without working a day in my life. So up thing I have enough houses now that I've rented out, that I make money off of the rental income, and overseas sponsorships and stuff I save जितना भी मैं करता हूँ. So it's enough money I make now that in the next 2 to 3 years, if I had no brand, no sponsorship, no nothing, maybe rental income from my houses and stuff will be able to sustain my current lifestyle. इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट एसेट यू Exactly. कैन हैव। And that उसके लिए obviously you need this, and उसके लिए you need education, and that's why I did a minor in economics Definitely. and an engineering degree. So लोगों को लगता है कि ठीक है all these things, but every penny I made, every penny I invested, every penny जो मैंने social media में invest करी, अब मैं उसी चीज़ों को अपने career development, future to quit, कोई भी sponsorship वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट। अभी जैसे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग काफी बूम कर रही है और काफी अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और इनहांस बॉडी बिल्डिंग के बीच में। अभी रिसेंटली एचएसएफ शो हुआ था जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करवाता है। तो भुवन भाई आपके क्या थॉट्स है, व्हाट इज दिस थिंग ऑल अबाउट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग? आप बिलीव करते हो इसके ऊपर, इट इज जस्ट अ गिमिक? व्हाट इज नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू यू? इसका कोई फ्यूचर है, स्कोप है आपके? Of course there is, but अगर आप natural bodybuilding, I think you have to stay true to yourself. Quentin is a bodybuilder that turned pro naturally as a IFBB pro. I mean, I did my first 2 shows naturally. Men's physique was different. क्या मैं आज naturally compete करके pro card qualify कर सकता हूँ? Probably not. Not for my genetics. But इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास clients नहीं है, मैंने लोगों को देखा नहीं है जो genetic freaks हैं। मेरे पास आज भी clients हैं जो naturally in easily IFBB प्रो कार्ड जाके गेन कर सकते हैं, बट क्या वो नेचुरली ओलंपिया जा सकते हैं? नहीं। सो आई थिंक इट कम्स डाउन टू योर इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड खुद का गोल। आई थिंक इट्स अ रियली नाइस गोल टू हैव इफ यू हैव शेप। मैंने कई इंडियन एथलीट्स को देखा है ऑनेस्टली, लाइक आई हैव कोच्ड सम ऑफ देम जिनकी क्रेजी गुड साइज, दे आर ओनली 20-year-old एंड दे हैव दिस ग्रेट शेप एंड डेंसिटी एंड दे आर नेचुरल, दैट आई फील लाइक दे कैन टर्न प्रो नेचुरली। अगर वो जितना लंबा आप उस तरीके के जेनेटिक फ्रेम को नेचुरल रख के आप आगे बढ़ो, उतना ही आप you have the potential to be with Mr. Olympia and even classic, or like even in open bodybuilding and stuff, and have a longer career versus जो लोग जल्दी शुरू करते हैं उनका career भी छोटा होता है। तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का आपके हिसाब से स्कोप है? Of course है, it depends on your values, आपके खुद की आपके क्या है, क्योंकि जो लोग ज्यादा enhanced है उनका करियर कितना चलता है। बहुत सारे आपने ऐसे बॉडी बिल्डर्स देखे हैं जो 3 साल के बाद उन्होंने कभी compete ही नहीं किया, ये इंजरी हो गई, वो इंजरी हो गई, मैं लेग ट्रेन नहीं कर सकता, मैं वो ट्रेन नहीं कर सकता। इतने सारे लोगों ने जो बनाया है ये, why do you think that happened? Don't you think that was because they pushed too hard when they shouldn't have? डेफिनेटली। ये भाई मेरे पास V8 गाड़ी है, अब उसको मैं स्पोर्ट प्लस मोड में चलाऊंगा तो मेरा तेल जल्दी खत्म होगा ना। कंफर्ट में चलाऊंगा तो ज्यादा चलेगा। गाड़ी तो है, V8 कार है, ग्रेट जेनेटिक्स, बट ग्रेट जेनेटिक्स के साथ अगर मैं फ्यूल को स्पोर्ट S प्लस मोड में ड्रिफ्ट करता हुआ लेके जाऊंगा तो वो खत्म हो जाएगी, और अगर मैं कंफर्ट मोड में आराम से ग्लाइड करके लेके जाऊंगा तो वो आगे चलेगी। गाड़ी तो सेम है हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार। That's the logic. So I think with natural athletes, if you're really genetically gifted and you have that drive and value कि अच्छा मुझे natural करके मुझे देखना है मैं कितना आगे जा सकता हूँ, you'll go farther than a guy who's abusing substances a lot early on in his career. मैं नेक्स्ट सवाल पूछूंगा, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैंने उनसे भी सवाल पूछा था। जुनैद भाई के बारे में बात करना चाहूंगा, क्या आप कंफर्टेबल हो? Yeah. श्योर। सो बेसिकली मैंने उनसे वाला सवाल पूछा था, मैंने उनसे पूछा था कि आपका रिलेशनशिप भुवन भाई के साथ क्या है। उन्होंने अपने कुछ
आंसर दिए थे। तो मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके रिलेशंस जुनेद भाई के साथ फिलहाल कैसे हैं? आर यू ऑन गुड टर्म्स, और क्या गड़बड़ हो गई थी और क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं? I was neutral. I think I'm neutral with him. I think it's just like, yeah, he exists and he is an athlete, he's a pro, and I'm pretty sure he's a pretty successful businessman too, or he's doing good for himself. So that's good. If I see him, I'll nod and I'll walk away. That's pretty much it. जो आप जिसको नहीं आप जानते हो, आप किसी को देखते हो, आप वही वैसे ही करोगे, right? So मेरा वही है, and can we be better than that? I don't think so. I don't think so because he has a pretty big ego, and I feel he's pretty fake. So I don't do well with people like that. Joe, they're bootlickers, or like, they're very like, have high egos, but also have like this kind of like fake persona of being humble. I like people who are real. That's it. I like to keep things real. अगर लोगों को लगता है कि I'm very like I just say straight up things, that I do say straight up things because that's how I am. I don't want to be fake. I don't care about social media. I don't care about these things. You like me, you hate me. Either way, I'm still doing my thing. I'm still gonna bodybuild. I'm still gonna compete. I love this shit. I do it for myself. I win or lose, I still do it. I come 16th at the Olympia, I'll still do it. I come 5th at the Olympia, I'll still do it. जिस दिन मुझे लगा कि ये जॉब है, उसी दिन क्विट करके मैं अपने I'm set for the rest of my life. I won't do this. I do it for the next 10 years because I love it. So I like that kind of people, like just straightforward हैं, जो realistic हैं. Like I just said, like Rahul is a better back than me. There's no problem. I don't think Junaid has ever said that. That these all these athletes are better than him, and he needs to stop competing. So what I try to say is that like I'll tend to gel well and be friends with athletes that are real. और इंडिया के I think I would say 85% athletes के साथ मैं friends हूँ, जिनके साथ मेरी almost every third day बात होती है. On Instagram, on phone, on WhatsApp. If you saw my call logs, you'll see phone calls with Indian athletes that last 1 hour. So I am friends with 85% of Indian athletes. जब वो 15% हैं, there's a reason for it. But इसका मतलब क्या वो खराब एथलीट हैं? क्या मैं उनके बारे में कुछ खराब सोचता हूँ? No, I'm neutral. I just let them be. And I'm sure they have their own circle. उनका खुद का friend circle है, उनके खुद के लोग हैं, करते रहो. No problem. But I like 85% Indian athletes. I'm friends with them. I'll call them. They'll call me. And I think realistically, I'm sure these guys are here and जो लोग देख रहे हैं, आप अपनी life को देखो. You cannot be friends with everyone. Okay. But you should be neutral with everyone. You shouldn't be like enemies with anybody. I don't think I'm like, yeah, मेरी और जुनैद की काफी हुई थी मुठभेड़, and obviously egos थे. मेरा भी, मैं young भी था उस समय, मेरा भी एक ego था कि I'm the first Indian IFBB pro. I worked my ass off for it. I sacrificed too much for it, and I was 1 week before. But then these technicalities and the things came, so frustrated him. I'm sure it did because उसका भी goal वही था, मेरा भी goal वही था. So वो समय ego था, but then things changed. उसके आगे बहुत सारे levels आ गए. So and maturity भी आ गई. So it's kind of like I don't think I want to fight him, or I have any bad intentions towards him. Yeah, like if मैं अपना मुंह चढ़ा लूंगा अगर उन्हें को दिख जाएगा. Like yeah, like hey, like just nod and move along. मतलब दोस्ती हो सकती है, दोस्ती Yeah, होने का like पूरी you're संभावना। neutral. You're just neutral. Like nod along. Like ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं और वो, and I think ऐसा हुआ भी नहीं है because I think I met his wife 2 years ago. Junaid की, I said hi to her, and she said hi to me and stuff, and I'm sure like जब मेरा ऐसा कुछ होगा, he'll be there. So it's very neutral. I don't think there is any bad intentions between me and him. मतलब पॉसिबिलिटी पूरी है दोस्ती होने की। There is no bad intentions. I think it's just being neutral, and I think he probably thinks the same way too. So it's okay. That's just how life is. तो भुवन भाई, आपके अभी साहिल खान भाई के साथ आपके कैसे रिलेशन है आपके? I was neutral with him. I liked, honestly, like for a very long time. Um, he definitely supported athletes. He did a lot and everything, but I still feel like अभी भी what he करते हैं? wanted from Divine and all these things that what happened last Olympia, and I feel like in retrospect shouldn't have even taken his prize offer, but they were just giving it, and I took it, and it became like a big thing. So that's okay if that's what they want to do, and then I don't think I'm on bad terms with him. Obviously, social media is not real. उसने कुछ बोला interviews में, YouTube videos में कट पीट के कुछ और डाला.
मैंने कुछ बोला, यूट्यूब वीडियोस ने कुछ कट पीट के कुछ और डाला, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, could have been solved by just having a phone call with each other. So I think that's where we are. I don't think there's any bad blood. There is no beef between two of us. No, no. I don't think I have beef with anybody, honestly. I But don't लोग think. बना देते हैं. Exactly, exactly. बन जाती है. Like, I don't think I have beef with anybody. Even तो even with Junaid, I don't think I have beef. I don't know if he'll say that or not. I don't think I have beef with him. तो साहिल खान भाई, भुवन भाई और आपके रिलेशंस उनके हिसाब से आर ऑन गुड टर्म्स. Yeah, it's in neutral terms. I wouldn't say like, obviously social media stuff happened, but there's no bad blood. And I would never go say anything directly off. I think it was just, as I said, cut beat, YouTube stuff, where people just wanted drama. Or maybe I learned that by couple people, like, मेरे साथ हुई है 3-4 लोगों के साथ ये सब चीजें. So it is what it is, and we just keep doing what, वो अपना फील्ड में है, मैं अपने फील्ड में हूँ. I'm an athlete, businessman, different. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो पर्सनल. नेक्स्ट 5 इयर्स भुवन चौहान अपने आप को किस डायरेक्टरी पे देखते हैं? Same directory जो अभी है. It's like कुछ goals हैं and फैमिली achievement है. गोल्स, हैविंग अ फैमिली. That will happen if it has to happen. It can't happen on the cost of my ambitions, my goals. But अगर वो align करते हैं मेरे goals के साथ, अगर पार्टनर के साथ मेरा अलाइनमेंट है, सब चीज़ें हैं, वैल्यू सेम है, सब चीज़ें हैं, एंड इट गोज वेल, एंड इफ इट्स सपोज टू हैपन इट विल हैपन. बट दैट्स नॉट समथिंग आई रियली, लोग बोलते हैं 25 पे शादी, 30 पे बच्चे, और ये सब ऐसे मेरे दिमाग नहीं चलता है. इट्स लाइक आई जस्ट थिंक कि अच्छा ये गोल है, ये टाइमलाइन है. अभी मेरा गोल 5 साल में सबसे पहले तो ये है कि वेट कैटेगरी निकलने के बाद, लाइक वेट कैप निकलने के बाद, उस वेट कैप को कितनी जल्दी मैं हिट करता हूँ, सो दैट मैं जब तक मैं 31 का हूँगा, 31 से लेकर 35 तक, आई डोंट हैव टू गेन एनी साइज. ये है मेरे दिमाग में. फैमिली नहीं चल रही है रिलेशनशिप अगर होगी और अगर वो आगे बढ़ती है, लेट इट गो ऑन अ पैरेलल लाइन. फिलहाल अभी आपकी कोई है गर्लफ्रेंड तो बता सकते हो? चलती रहती है. ओहो. चलती रहती है टाइमलाइन के साथ. तभी जब कोई परमानेंट होगा तब तक वो पैरेलल लाइन चल रहा होगा, रिलेशनशिप विद द करियर. बट इट विल नेवर बी कि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी एंड देन इट विल गो टुगेदर. दैट्स नॉट गोना हैपन. तो अब हम लोग अंतिम समय पे आ रहे हैं इंटरव्यू के, तो अब रैपिड फायर क्वेश्चंस के साथ खत्म करते हैं इसको. आपका फेवरेट चीट मील? मटन रोगन जोश या लाल मांस विद नान. ग्रेट चॉइस. ओके. सो आपका इंस्पिरेशनल बॉडी बिल्डर जिसकी वजह से आपने लिफ्टिंग करना शुरू करा, या आपको अभी भी करता हो? ग्रेग प्रेट. अभी भी करते हैं? ठीक है. तो ये वाला वैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, बट अगर करंट बॉडी बिल्डर आप लाइक कंपेटिटर्स की बात कर रहे हो, तो आई थिंक लाइक माय फेवरेट बॉडी बिल्डर हैज बीन फिल हीथ, एंड नॉट फॉर हिज फिजिक, फॉर हिज माइंडसेट, एंड आई हैव टॉक्ड टू हिम फॉर दैट. वो मैंने बात भी करी हुई है उनसे. ग्रेट. वैसे मेरे भी फेवरेट बॉडी बिल्डर फिल हीथ है. ओके. या नो, आई जस्ट फॉर हिज माइंडसेट ऑनेस्टली. तो आपका घर का खाना कौन सा आपको फेवरेट लगता है आपका? दाल चावल भिंडी या दाल चावल गोभी, अरहर की दाल. सेम है. ओके. सो अभी वैसे दिमाग में तो नहीं आ रहा और कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन. अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, अंतिम समय क्वेश्चन कुछ भी पूछ I सकते think हो. that's a pretty long interview, 3 days out. 3 days out. टाइम भी हो गया अब तो. So, but yeah, I think it was pretty fun. बहुत मजा आया बात करके. I know it's gonna get a lot of mixed reviews. अब depend करता है या edit कैसे करता है. See, if he wants masala or if he wants to like keep it like actually like engaging stuff. Funny thing ये है कि मैंने इंटरव्यू किया था तरुण गिल के साथ 3 महीने पहले. He never posted an interview because I didn't talk about any Controversies. Yes. But I didn't avoid it and I didn't talk about it. So there was nothing to edit and do. So the interview was not posted. This has happened with a couple other YouTubers too. अगर मैं नहीं बोलूँ और मैं अगर actually real genuine stuff बोलता हूँ तो they don't post it. अगर मैं उसमें कहीं पे मैं कहीं कुछ वर्ड बोल दूँ, जैसे अभी मैंने 2-3 चीजें मैंने बोली राहुल की बैक के बारे में या लीग के बारे में या समथिंग, सब कट पीट के जो मैंने अच्छा बोला वो तो आएगा नहीं. बस मैं ये किया, हाँ आई विल बी लाइक, क्या मैंने बोला आई डोंट इवन रिमेंबर कि आई थिंक कैन ही बीट मी, बस इतना आ जाएगा. व्हाट अबाउट ऑल द अदर गुड स्टफ आई सेड अबाउट हिम, बीइंग एट 100% एंड ऑल दैट, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर. ये डेफिनेटली कट नहीं होने वाला. That's what I like to hear. तो देखते हैं. But that's my point. तो आप लोगों को ये मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ. मैंने इंटरव्यूज बहुत किए हैं, but they never got posted क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी नहीं थी, और जो भी कंट्रोवर्शियल है वो सबसे पहले पोस्ट होता है मेरा.
बट अब मेरे कंट्रोवर्सी लाइव सेशन से पोस्ट होता है जिसमें मैं क्वेश्चंस आंसर कर रहा होता हूँ किसी और के उसमें से पोस्ट होता है. बट ये वाली बात तो है, जब आप ट्रेडमिल पे होते हो तो आप काफी चीजें बोल देते हो ऐसे. Same way that I'm talking to you now. You ask me right questions, I'll answer that. आप लाइव पे आके मेरे से क्वेश्चंस पूछो, मैं बोल दूंगा यही जो मैंने आज बोला है. नहीं, बट कई लोग कहते हैं कि आप ट्रेडमिल पे आगे आपको वो अलग ही इसलिए है ना जोश बिकॉज इट्स नॉट अंदर, इट्स लाइक जो मैं इंटरव्यू में जिस तरीके से मैं बातें करता हूँ वैसे ही मैं जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उनको मैं आंसर कर रहा हूँ. बट वो जब कोई यूट्यूबर डालता है वो क्वेश्चंस, वो ये नहीं डालता कि वो क्वेश्चन क्या था, क्योंकि वो क्वेश्चन को तो कभी डाला ही नहीं ना. व्हाई डोंट यू गाइस मेक दिस व्हेन यू मेक लाइव वीडियोस कि जो मैं क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ पहले उस क्वेश्चन को ऊपर डालो स्क्रीन पे ताकि लोगों को पता चले कॉन्टेक्स्ट क्या है. फिर जो मैंने पूरा आंसर दिया उस पूरे आंसर को डालो, 10 सेकंड की क्लिप मत डालो. तो then you'll understand कि it's not कि I'm worked up, I'm just being real like how I'm right now to the camera. जो मुझसे क्वेश्चन जिसने पूछा मैंने उसको आंसर दिया, अपना ओपिनियन दिया और आगे बढ़ गया. उसमें भी लोगों को है कि अब लाइफ नहीं है, अरे बट द थिंग इज दैट्स व्हाट एवरी एथलीट डज. Andre Ferguson does it, Corey Morris does it, you know, Brandon does it. These all these guys at the top level at the Olympia, जब वो लोग ऐसे बात कर सकते हैं तो why can't I talk like that? Why should I be just the one, you know, being fake humble? बहुत athletes हैं fake humble यहाँ पे. Doesn't mean I'm not humble. If you meet me in person, जिन लोगों ने भी मेरे से मिला है, I'm sure they'll have an opinion. Let's see what they think about me. तो फाइनली अब हम लोगों ने भुवन भाई के बारे में बहुत सारी उनसे बातें करी और फाइनली मैंने भी बहुत कुछ जाना उनसे पर्सनली मिलके जो शायद ऑनलाइन मैं नहीं जान पाता. तो बहुत मजा आया. अब 3 days आउट है वो दिल्ली प्रो शो के लिए एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू. मे द बेस्ट मैन विन एट द दिल्ली प्रो शो. और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, पर्सनली ऑनलाइन आपका पता नहीं चल पाता इतना, बट पर्सनली आपसे मिलके आपसे सीखने को चीज़ें मिलती हैं एंड आपका माइंडसेट और बेहतर तरीके से पता चल जाता है. और वैसे भाई गर्लफ्रेंड वगैरह भी बना के रखते हैं, ये भी पता नहीं था बट तो वो भी पता लग गया. तो कैसा लगा इंटरव्यू गाइस, कमेंट करके जरूर बताना. आपका फेवरेट पार्ट कंट्रोवर्सी वाला लगा या नॉन कंट्रोवर्सी वाला लगा, आप लोग जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो. बाकी सपोर्ट करो यार इंडियन एथलीट्स को, हेट मत दो. एथलीट्स बहुत लोग मेहनत करते हैं एंड डेफिनेटली भुवन भाई भी उनमें से एक है जो एथलीट मेहनत करते हैं. सबको प्यार दो, अच्छे से रहो. और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ शेरू क्लासिक एट IHFF on 16th, 17th and 18th. And any last words from the guest himself? Yeah, well, thank you guys. I think to watch this episode and बाकी की जो videos हैं to support his channel and keep जो भी आप viewership देते हो for his channel, other YouTube channels and stuff. Doesn't matter whether you like masala or not. सबको पसंद आता है masala at some point. So let's just make sure that the fitness industry in India is growing. I think सबका goal तो same ही है. तो मेरा goal चाहे सिम का हो चाहे किसी का भी हो, they're all doing it for the fitness industry. They're part of the industry. So let's keep it fun. Let's keep it no drama, no hate, and as he said, no hate and all that. And every athlete का mindset strong होता है. That's why मैं भी I don't really care कि जब कोई athlete बहुत ज़्यादा बोलता है कि मैं best हूँ या मैं ये हूँ. You need that. You need that level as mentally to push yourself. So I think instead of hating the athletes, just support them. But I don't think कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी या नहीं आएगी. But at the end of the day, I'm glad कि आप support कर रहे हो channel को and you're watching these content and industry is gonna keep growing हर जगह world over and in India, and let's make sure that Indian industry is the biggest fitness industry and we have more Indians coming to the Olympia than any other country. मेरा तो यही goal है, मैं तो इसी तरीके से सोचता हूँ. I hope more people can relate to that. The goal should be maximum athletes coming to Olympia. And From India. Yes, a maximum. That's what our goal should be, and that's what we should strive for from world over. I don't care like if you were born here or not. I think it's more so like our Indian genetics and our Indian representation. क्योंकि मैंने देखा है जब जितनी बार मैं देखता हूँ ब्राजील, कोरिया और कितनी कंट्री के कुछ हैं, 2-4 कंट्रीज और भी हैं, कोलंबिया, 2-3 यहाँ यूरोप के हैं जो बहुत सारे जाते हैं, 3-3, 4-4 एथलीट. I think it's about time now to change that. And it will happen. Yeah, of course it will. I think everybody in the industry as a whole will do that. So definitely looking forward to that. So yeah, and 3 more days. बहुत मजा आया बात करके. और भुवन भाई हैं तो भाई आप वन ऑफ द बेस्ट मेंस फिजिक एथलीट फ्रॉम इंडिया. तो आपसे उम्मीद करता हूँ आगे भी जाके आपसे बात होगी. Of course, yeah. बस अब भाई बहुत मैं थक चुका हूँ. खत्म करते हैं इंटरव्यू को. हाँ चलो, लेट्स डू इट. बाय बाय.